Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Syavar Ramachandra Bhagavan Ki Jai उमापति महादेव की जय पवनपुत्र हनुमान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् हरि So we will start with Bhakti Prasanna. In Sadhana Jivan, it's like a bird. And we need two wings to fly successfully. Vedanta teaches us the process of discrimination. Discrimination between Sat and Asat.
what is and what is not. और ये विचार पूरा जिंदगी भर चलना चाहिए. कैसे? ना, alertful living. See, many of you or most of you travel. पहाड़ में आप लोग जो गए हैं, you have seen the famous quote, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. It's very important for our spiritual life. Very, very important. That is why to describe this spiritual life, that how the way is, Kathopanishad says, Shurasya dhara nishita durantvaya durgam pathastvat kavayo vadat. Shurasya dhara, as if it's walking on the sharp blade. And when nishita durantvaya, suppose it's in a no moon night, there is not an iota of light, and you have to cross the road, and you have to walk on the sharp blade. Why this is? Because due to our Purva Janma Samskara, due to our past impression, we get indulged into the Maya. We start thinking, this is the right thing. This can give me the Sukha. And how is spiritual life? Now, it's a little bit devoid of our own thinking process, own lifestyle. So it looks like as if very bitter, like poison. But pariname amritopamam, Bhagavan is saying in Bhagavad Gita. It gives the nectar. So the thing is how this thing will come. As Chinmay Mission, we deal with the Advaita Vedanta. But Advaita Vedanta never discarded bhakti. What is the beauty of Advaita Vedanta? The beauty of Vedanta is it accepts it. If you study Shankara Bhashya, you will find Bhagavan Shankaracharya ji has accepted all darshanas. But in the Siddhanta, he is just steady that no, Advaita. But to prove it, he has taken from all darshanas. And absolutely he has not negated bhakti. Because all the stotram, we get the famous stotram on any devata, any devi, any nadi, composed by Bhagavan Shankaracharya ji. And the puja paddhati we do, you should know that puja paddhati was introduced by Bhagavan Shankaracharya ji. That Panchopachar puja, Dashopachar puja, Shadoshopachar puja, it is introduced by Bhagavan Shankaracharya. So he did not discard bhakti, but at the same time he has defined the bhakti, what it is, because bhakti is not only not based on your only emotion. There should be a nice blending of Advaita Vedanta and bhakti. Like Vairagya, everything else
have, some gradients. भक्ति का भी ग्रेडियंट्स है. उत्तम भक्ति, मध्यम भक्ति, निम्न भक्ति. So he has composed a sloka on that. मंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरुस्येयं प्रवृद्धा सूयते फलम्. मंद मध्यम रूप अपि वैराग्येन समाधिना. बहुत सारे लोगों को ऐसे है कि भक्ति नहीं होता है, लेकिन प्रसादेन गुरोः, गुरोः प्रसादेन, गुरु की कृपा से स यं प्रविद्या सूयते. You just think about why in Bengal we are very familiar with, the life of Swami Vivekananda. उनकी इस आध्यात्मिक जीवन में उत्तर. तो he used to suffer from terrible poverty. Though he was the son of very rich family, very, very rich family. You can't imagine the size of his house. If you go in Kolkata, you can see. His father used to keep the students from गांव-गांव से लोगों को पढ़ाने के लिए. कितने परिवार को उन्होंने खिलाया, अपने घर में रखा. लेकिन जब उनका अचानक मृत्यु हो गया, सारे आत्मीय परिजन सब दूसरा रूप ले. एंड Narendranath, means Swami Vivekananda, in his pre-monastic state, in such a poverty that most of that night he used to come back very late at home. रास्ते में पानी पी के आते और अपने माँ को बोलते थे आज मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि I had a party with my friends. उनको लगता था कि मेरा कोई दूसरा भाई बहन. भगवान श्री रामकृष्ण को पता चला कि he is my main army, chief army. If he is suffering from that, और उनको सहन करने का इतना शक्ति भी अभी नहीं, क्योंकि आप देखिए माँ शारदा देवी इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस. कोई इनको बोलते हैं माँ अन्नपूर्णा है, माँ लक्ष्मी. पूरा रामकृष्ण मिशन में लक्ष्मी पूजा के दिन माँ शारदा की फोटो से ही पूजा होता है, लक्ष्मी का मूर्ति नहीं आता. सो गिवर ऑफ ऑल वेल्थ. But we know, or we don't know, I don't know, after Sri Ramakrishna's demise, she went back to his paternal house. And they were also suffering from poverty. ऐसे poverty कि माँ को राइस उबालने के लिए जो राइस होता है वो ही नहीं था. तालाब से कुछ भाजी उठा के वही उबाल के खाती थी. नमक उस समय बहुत कीमती चीज था, तो उसमें नमक देने का भी पैसा नहीं था. जिनके नाम पे अन्नपूर्णा स्तोत्र है, जिनके नाम पे लक्ष्मी स्तोत्र है. एंड फॉर द इयर्स शी स्पेंट इन दैट वे. लेकिन उनके पास सहन करने का शक्ति था. ये भी भगवान की लीला की एक अंश है. लेकिन श्री रामकृष्ण knew that Narendranath or Swami Vivekananda now in a very tender condition. So he suggested Naren or Swami Vivekananda, you go to Ma Kali. She is alive, please believe me. Please have some bhakti inside and pray to her.
that give me some money, at least to run my household. Narendranath went. But whenever he just stood in front of Ma Kali, he started feeling ashamed because he started realizing the Kali Tattva in front of Ma Kali. And he started scolding himself that how shameful I am in front of the Almighty. I will ask some money. He came back to Sri Ramakrishna. And Sri Ramakrishna forced him to go. No, I don't believe in Murti. I have no bhakti. I'm a Vicharvadi Vedanti. So Ramakrishna knew everything else. Then he started telling, okay, I will pray for you. So Guru Prasadena Sayam Pravidha. गुरु कृपा ये कैसे आएगा? One Mahatma used to tell, ये देखो ये कृपा वायु जो है ना ये बह रहा है, लेकिन किसको मिलेगा? जो नाव में पाल उठा देता है ना, उन्हीं को पता चलता है जो वायु चल रहा है उनका गति किस तरह है. Only they can take the advantage of the air. Unless and until आप उसका मास्तूल उठा दे, उनका पाल उठा दे. So bhakti is that much of important in our spiritual life. But for bhakti, we need one particular thing. Because today or yesterday also, we heard one thing that why we can't get we can accept, but why we can't abide in that knowledge. The first point was chitta malam, the impurities of mind. What is the impurities? Now our life is totally based on likes and dislikes. And that's why we can't accept anything else easily which is not conducive for me, which is not inside my ideas. Then मन में चालू हो जाता है खचर पचर, ऐसे क्यों है? And we are not happy because of we can't accept anything else happening. We forget the basic thing, जो होना वही होता है. अब जितना भी सिर हो, anything else it happens, those who can accept, they are happy. ये भक्ति की तत्व है. हम you don't mix up with the Advaita. Every darshana has their own approach. So, वैराग्यम च मुमुक्षत्वम, ये सबसे बड़ा बात है. In our life, suppose here 30-40 people, don't we know that you are also busy in your family, in your work, in your social life? You all sacrifice it because you have prioritized this camp and you have chosen. Our whole life depends on what we prioritize in our life. And that priority depends on the state of our mind. The mind which is soaked with vairagya and viveka
they will choose some sort of decision which will nourish their vairagya and vivek. And when that vivek and vairagya will be little bit increased, your mumukshuta, your seeking for liberation will be higher and higher. If my mumukshuta is not there, and I am doing a lot of japa, because we want to know, that what is the alternative. In our life, we always search for alternative. In Vairagya Path, it has some prescription. We find it very hard because we don't like it. अब देखिए उन लोगों के लिए ही 5 बजे या 6 बजे योगा कठिन है. Those who don't like it, those who like to sleep on that time. But उसी समय आप देखेंगे, now a very new crowd, if you go to the lake or any young age, not only the old people, they are running because they have prioritized it. Unless and until you prioritize your mumukshata, Bhagavan Shankaracharya is telling, Etayor mandata yatra viraktatva mumukshayoho marau salilava tatra shamodehe bhanamatra. It's like Maru Marichika. Unless and until you are having mumukshata and supporting Shama, Dama, Uparama, what about the qualification you needed? If I tell that I want to be an MD of neuromedicine, it is possible. No. Because I must have to have some qualification prior to that. I need an MBBS. Not only that, a good marks. Then I have to sit for the entrance. Then, according to my result, I will be chosen by the authority that whether I am eligible to study or not. So, when that spiritual success, spiritual achievement is concerned, we need some sort of qualification, and that qualification is Shama, Dama, Uparama, and everything else. If it is not there, then it is like Marusalilava, like the mirage. It appears like water, but there is not a drop of water. In our spiritual life, we need little bit supporting thing, and how you will get it? Through the bhakti. Bhagavan Shankaracharya is giving a wonderful definition on bhakti. I told you there will several definitions of bhakti. बहुत लोग भक्ति के बारे में बहुत कुछ बोला है. Chinmay Mission strictly follows Shankara philosophy or Advaita Vedanta. So when we will follow bhakti also, we will take what our Guru Parampara says regarding bhakti. First time he is telling, मोक्षकारन सामग्र्याम, मोक्ष के लिए जितना कुछ है आपके पास, what about the things are there? A lot of things, because आप योग सूत्र में जाइए, उधर भी कैवल्य मुक्ति, हर वस्तु में. आप भक्ति दर्शन में आइए, उधर सारोग्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, बहुत सारे मुक्ति है. बट अकॉर्डिंग टू द अद्वैत वेदांत मुक्ति, उसमें भी व्हाट इज द गरीयसी, व्हाट इज द बेस्ट,
The eldest is bhakti. Mean unless and until you are having bhakti in you, moksha is not. मोक्ष कारण सामग्र्याम जितना सामग्री है what about the ingredients you are having for moksha bhakti hi eva garyasi eva means only bhakti alone is the highest path. Then what is bhakti? Swa Swarupa अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते. खुद को ढूंढने का नाम ही भक्ति है. If you see the bhakti takes or bhakti sangeet, one Sufism is there, composed by Khaja Mainuddin Chishti or something. I forgot the name. It was sung by Mirabai, Sufi Sangeet. You know all, everyone knows that song. सांसों की माला पे सिमरू में पी कर. उसमें एक लाइन आता है, हर हर में है हर बसी, हर हर में है हर बसी, हर हर को हर की आस, हर हर को हर की आस. हर हर में मैं ढूंढ फिरी, हर हर में मैं हर को ढूंढ फिरी और हर है मेरे पास. So it is the invention of divinity within very seriously with the highest priority, and that is called bhakti. Once I went to Mandir Pranam. You know that by the grace of Guru, last 7 years, I'm serving the Swamis in either way or any way. So after that, I went to do pranam to a monk, senior, जिनका मैं सेवा करता था. उन्होंने बताया आज तो विशेष दिन है, तो मंदिर प्रणाम करने गया. हाँ. बोला बाहर देखा कितना भिखारी बैठे हुए हैं. मैं बोला हाँ. उनके अंदर तुम्हारा भगवान को ढूंढ पाया? The first question he asked me, could you find out your God amongst their poors? First time I heard that, because I was in a very tender age. I did not have that sort of exposure also, that I used to think this is Bhagavan. Unless and until we start saying my Ishta Devata in everywhere, that is the impact of bhakti. Bhakti means, we know all, that Sri Ram Krishna's bhakti, Sri Ram Krishna's bhakti, Sri Ram Krishna's bhakti. Once Swami Vivekananda was asked कि आप पूरा वेस्ट में वेदांत सिखाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं, आप अपने गुरु के बारे में एक भी शब्द नहीं. Do you know how he answered? That if you ask me to drink the whole ocean, I can. If you ask me to
shift the mountain little bit, that also I will try, but it's not possible for me to describe my Guru. And you are not eligible to listen to him, listen about him. Please tell. Only one word he told him. He told he is LOVE personified. भक्ति का मेन रहस्य है प्रेम, love for my God in the form of my Ishtadevata, in the form of everything else. And it will be pakka then whenever you will have your own Ishtadevata and love for it. So, from Ramayana, Tulsi Ramayana, the first of starting, see how wonderful our Tulsidas is concept. Srinathe Janaki Nathe Abhed Paramatmani Tathapi Mama Sarvasva Ram Kamalalochana. In the first line, it clear. I know Srinath is Janaki Nath. Janaki Ma and Sri Ram is Abheda Paramatmani. They are one manifested in two bodies, that is Sita Rama. I know it. Srinathe Janaki Nathe Abheda Paramatmani. Tathapi, after knowing each and everything else, Tathapi Mama Sarvasya, my each and everything else is Tathapi Mama Sarvasya Ram Kamalalochana. Bhagavan Ramchandra is my Ishtadev. And then he started Bhavani Shankarau Vande Shraddha Vishwasarupino Yabhyam Vinana Pashyanti Siddha Swanta Sthamishwaram. I know Bhavani, Shankar, they are Shraddha, they are Pratik, symbol of Shraddha and Vishwas. See, unless and until you are having that core bhakti, love, devotion, dedication for the Ishta with the Nama, Rupa, Guna, Pratik काम नहीं आता. सिर्फ प्रतीक पुजारी फैनेटिक हो जाता. अब देखो, तिरंगा लहरता है, तिरंगा मिट्टी में गिर गया, सपोज कोई उसके ऊपर से साइकिल चला, किसी ने थोक दिया, देश में आग लग जाएगा या नहीं? ये तो एक पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ क्लॉथ. रात दिन हम लोग हमारे भारत में थूकते हैं, आग नहीं जलता. Because those who are fanatic about that piece of cloth,
they start with. We should know the impact of the gist of the Pratyanga. And that is unless and until we are established in the Bhagavan Tattva. That is why itna stotra, itna kuch, to know who is my Bhagavan and what is my stand before my every Bhagavan. If I can see, I will worship Radha Krishna. But in the form of that this is my Ramachandra. Bhagavan also pays, attention into it. In Krishna Avatar, one afternoon, Bhagavan was just with Rukmini Ma. Suddenly, he came to know that Hanumanji is coming to visit him. उन्होंने रुक्मिणी माँ को बोला, उठो उठो उठो, जल्दी से ये राजवेश परित्याग करके वनवासी ड्रेस पहनो, क्योंकि हनुमान आ रहा है and he wants to see me in that राम रूप. क्योंकि भगवान हनुमान को विश्वास नहीं था कि वही राम अभी कृष्ण रूप में द्वारकाधीश बना है. What is Bhagavan's empathy for the devotees? चलो रुक्मिणी उठो, ये राजवेश परित्याग करके अभी वनवास पहन लो. मेरा भक्त आ रहा है जो मुझे सिर्फ राम रूप में ही देखना चाहता. श्रीनाथे जानकी माथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचन. Clear? How is Ram? How Bhagavan comes, Bhagavan comes means avatar. He descends. Because of us, there are two tattva, you should know that. I hope you did not pay attention. One is avatar, another is Bhairava. भैरव, जैसे बोलते हैं ना काल भैरव, ये भैरव, और उनका रूप देखेंगे शिव जी जैसे. यू शुड नो दे आर नॉट शिवा, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड शिवा. अपार्ट फ्रॉम द थिंग आई एम जस्ट टेलिंग, अपने मां काली का रूप देखा है हर व्यक्ति. मां काली के पैर के नीचे शिव जी नहीं बल्कि भैरव है. He looks like Shiva. भगवान भक्त की आकर्षण में आते हैं, और जब आते हैं और आती है उनको हमें अवतार बोलते हैं कि भगवान अवतारण करते हैं. और भक्त जब साधन करते 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 देवत्व प्राप्त होता है. साधन करने का उद्देश्य क्या है? न जन्मना जायते शूद्र, हम लोग जन्म से ही पशुवत है, और हम लोग साधन करते करते पशुत्व से मनुष्यत्व का अर्जन. और इसी मनुष्य जीवन में साधन करता हूं देवत्व प्राप्ति के लिए. एंड व्हेन a devotee, a bhakta becomes, I can coin this word, terrible bhakta, जिनके पास अपने उपास्य देवता के सिवा और कुछ नहीं है, उनके लिए ही भगवान को आना पड़ता है. और वही भक्त को भैरव बोलते हैं. भैरव भगवान से पहले, मतलब पृथ्वी में आते. आप देखिए काली घाट में नकुलेश्वर भैरव इज मच मोर ओल्डर देन मां काली. इन वैष्णोदेवी you will get Kal Bhairav. In every Devi Peeth you will get
Bhairav. Now, when Bhagavan is taking the form of Manushya, he must have to play some Manushya Rupa, means the role of Maryada Purushottam Bhagavan Ramchandra. Because people will start imitating what is his behavior. We always tell balanced character, balanced character, balanced character. What is the balance? आज आप जस्ट टेस्ट कीजिए, अपने जगह पर अपना बैग छोड़ के जाइए और आके देखिए कि वो बैग को कोई दूसरा चेयर में शिफ्ट कर दिया और आपके जगह पर कोई बैठ गया. See, your mind can accept it or not. You have come here only for 4 days. कोई कोई तो 2 दिन के लिए आए, कोई कोई डे स्कॉलर है. अब जानते भी है फुल्ली ये मेरा नहीं है, कभी हो नहीं सकता. ये हम लोग और भी कोई कैंप करेगा तो भी खड़ा होगा. बस हम लोग एक टेम्पुररी, वेरी टेम्पुररी, वेरी 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 टेम्पुररी चेयर में भी अपना जगह छोड़ नहीं सकता. अब सोचो, आप घर वापस जाके कोई बोले कि ये घर अपना नहीं, उतना तो छोड़ो, अपने फेवरेट जगह पर जहां पर आप बैठ के चाय पीते हैं ना, उसमें कोई बैठ गया और भगवान को बोला गया कि तुम राजा बनोगे, कल राज तिलक होगा. इज गेटिंग रेडी और सडनली बोला गया राजा तो छोड़ो, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा. प्रसन्नता यान गताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा. प्रसन्नता. My Bhagavan is present. You just imagine this form of Bhagavan. What will happen? It's a science. आप टहलने निकलो, कोई बाहर से गेस्ट आए हैं जिनको आप कभी इस जन्म में तो नहीं जानते. जस्ट स्माइल एट हिम. उनका इच्छा ना रहने से भी वो he will smile at you. This is a science. You just smile on someone else, means away. He will also smile at you. You just try, you can try, because I tried each and every day. जिनको जानते भी नहीं ऐसे करता हूं. मैं तो देखा जिन्होंने ये सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते वो भी ऐसे करते. Whenever you will, remember this prasannata, my Bhagavan is present in your face, that same smile will come. And when you will appear in a smiling face, the whole world will be smiling face in front of you. This is the science. If you want to see a happy world, be happy first. And this is the only way. Prasannataya vigata. Prasannataya gata abhishekata. अभिषेक गत हो गया, वो बात नहीं. आप महल में भी नहीं रह सकते.
You have to go for an exile, and not for 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, for 14 years. As if nothing happened. That is called acceptance. जो व्यक्ति ऐसे एक्सेप्टेंस लेकर अपने जीवन जीते, वो व्यक्ति पूज्य हो जाता है, मतलब देवता। देवता मतलब क्या होता है? दिव धातु से देवता होता है, जिनका अंदर का डिविनिटी ऑलवेज प्रकाशित रहते हैं, वही देवता है। ऐसे नहीं कि देवता लोग सिर्फ स्वर्ग में रहते, देवता इस धरती में भी रहते। That is the actual impact of Devata. The purpose of, suppose, spiritual education is to manifest your divinity within. जो भी आप क्लास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, दान दक्षिणा जो भी आप कर रहे हैं, unless and until it helps you to manifest your divinity within, Maru Salilava. See how all the subjects, all the darshanas are connected. It appears as different. Like वेदांत में बोलते हैं ना कि सोने की नेकलेस, सोने की बैंगल, सोने की ये इसको क्या बोलते हैं, नागफूल, इयररिंग, they are only different in the name and form. Basically they are one. एक भक्त, बहुत पैसा की जरूरत पड़ा, उनके पास एक सोने का गणेश जी और एक मूषिक वाहन था। तो इतना खराब अवस्था हो गया कि उनको लगा कि ये कुछ दिन के लिए बंधक देना पड़ेगा। तो सोचा भगवान को तो मैं छोड़ नहीं सकता, मूषिक को दिया। तो मूषिक को उन्होंने वजन किया, सोने का रेट ये है, पैसा दे दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद बिजनेस का सवाल था, तो उसको भी बंधक देना पड़ा गणेश जी को। गणेश जी को लेके गया सुनार के पास और वो नापने लगा, और जब रेट किया तो एक ही सोने का भाव। भक्त थे, बोले भाई गणेश जी का भी जो रेट लगा रहे हो, मूसिक का भी वही रेट लगा रहे हो। बोला भाई ये आपके पास गणेश जी और मूसिक, मेरे पास तो सोना ही सोना है, ये मेरा काम ही वही है। सो हु इज द भक्त? He sees that my Bhagavan, who is the intrinsic nature of everything else, he has been manifested in everything else. And that is the actual impact of bhakti. Hari Om Tat Sat. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Jai Jai Ram Jai Jai Ram. सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
आज की आनंद की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। Thank you for your coming. Radhe 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 Govinda Bhajuman Radhe Govinda Bhajuman Radhe Govinda Bhajuman Radhe Govinda। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Brahmachari. Today's sessions, please everyone